Hey, the prediction was spot on. So if you go and check yesterday's video around 2:40, 2 minutes and 40 seconds in the English version, I had mentioned two things. One is uh, I wanted a close below 18,200, and the second is if it caps down, I will not sell. I will look for it a selling opportunity around 18,200 because my stop loss will be uh, a candle close which is above 18,200, which is here in this case is 270, and it is again, it has closed below the range, but it has gone and touched that range. So beautiful opening. The structure in Bank Nifty was the same lines which I drew yesterday. Please do check out the reason of these uh, lines explained in yesterday's post market. Now I'm looking for a short, so I was already in a short in Nifty, so did not really take this. But again, if you want to trade, this is very simple. uh, if you have a bearish sentiment and Bank Nifty is closing below this, very good support, and so you don't really look for a sell, you look for a sell when it comes back, and the stop loss could be a candle which is above this. Did not take this because I was in Nifty. So now where did I go wrong in this one? My system trade today gave a trade where it was a one below one sell, above one buy, and it triggered by one or two points the above one, and I went and bought this. Stop loss was 40 points. My stop loss got hit. Did not take the second trade because some of my profits were taken, which I made in the morning trade. So that's it. I think no volume structures in Bank Nifty, but Nifty had good volumes in the afternoon as well as the end. What will I do on Monday? I'll wait and watch how this reacts, because this is what I wanted. I've been mentioning. So basically this week, all these 3 days or 4 days, I have predicted this accurately. So here it was I was looking for a profit booking and it came as a gap down. Then I mentioned on this day that I'm not looking for a short. I'll look for a long. I'll look for a short only at 18,200. 18,200 came yesterday after during the expiry. So mentioned that after a gap down, if it caps down, I look for a short at 18,200, or I'll look for a short once a candle closes below 18,200. So beautiful predictions on all these days. Now I'll wait and watch on Monday what happens and then decide. No trades for Monday at open. Thank you. तो अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट अगर आपने कल का देखा है पोस्ट मार्केट, तो मैंने बोला था आप जाके 240 पे चेक कर सकते हैं कल के पोस्ट मार्केट में, कि मैंने बोला था कि अगर ये गैप डाउन होता है तो मैं 18,200 के आसपास बेचूँगा, कि मेरा स्टॉप लॉस ये है इसका है। तो वही हुआ, गैप डाउन, और ये आया वापस 18,200 टेस्ट करने के लिए। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स बने थे। वॉल्यूम तो स्ट्रक्चर्स था नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे पूरे दिन निफ्टी में भी। और कैसे इसको ट्रेड कर सकते थे, अगर आप देखें तो ये दो लाइन जो मैंने कल बनाई थी, क्यों बनाई थी, आप चेक कर सकते हैं मेरा पोस्ट मार्केट कल के लिए, देखने के लिए कि ये लाइंस क्या है। सेम लाइंस जब एक बार बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है सेकेंड लाइन के नीचे, सेम लॉजिक से मैंने कल अपना 43,300 पुट बेचा था। सेम लॉजिक से अगर आप आज कर दे तो आप बेच सकते थे। मैं ऑलरेडी ट्रेड में था निफ्टी में, तो इसलिए मैंने नहीं किया ये। तो बेसिकली ये ट्रेड है कि सेकंड लाइन के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर आप कंसोलिडेशन का वेट कर सकते हैं या रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा कोई भी कैंडल जो इस पहले लाइन के ऊपर क्लोज है। सेम मैंने कल भी किया था। और टारगेट्स नया लो। कहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स कम हुए, यहाँ पर मेरा जो सिस्टम ट्रेड था जो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, सारे सोशल चैनल्स पे शेयर करता हूँ, उसमें बेसिकली मैंने बोला था 1 क्लोज के ऊपर बाय करूँगा, 1 क्लोज के नीचे बाय सेल करूँगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1 का हाई या लो जो भी ट्रिगर हुआ। इसमें 1 o'clock का हाई टूट गया था 1-2 पॉइंट से, तो मेरा बाय ट्रिगर हुआ था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और इस वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए। नहीं तो बहुत अच्छा क्लोज होता आज, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट टॉप पकड़ लिया था यहाँ पर।
अब मैं मंडे क्या करूँगा, अब जैसे अगर आपने मेरे पोस्ट मार्केट लास्ट 3-4 दिन के देखे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे 3-4 दिन के प्रेडिक्ट किए हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि वो इस रेंज में था, अब वो इस रेंज के नीचे क्लोज़ हो रहा है, तो देखते हैं क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। 1 आवर क्लोज मंडे के बाद मैं डिसाइड करूँगा क्या होगा, पर अभी मंडे के लिए मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है ओपन पे। थैंक यू।